Since class 11th. I think I said chemical bonding, right? Yes, Harsha. Harsha, am I audible? Yes, sir. जी. Chemical bonding. अच्छा, तो सी since बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पे, so tell me, like, is there any particular topic that you want to study? Or else I will start with the questions. I can start with the questions. Start with the questions. Okay, fine. One of this is an ionic compound. Where CCl4 is repeating twice. Sorry, CCl4. अच्छा, ये 2 बार आ चुका है ना, इसको छोड़ दीजिए. It's a typing mistake in the book. Yes, Harsha, tell me which one will be. Where is it MgCl2? Yeah, correct, very good. MgCl2. ठीक है. चलिए. This one, which of the following? Which of two? CH3F and CH3Cl, which will have higher dipole moment, and why? Where CH3F? Yeah, correct. And the reason? The difference of electronegativity is more. Yeah, higher electronegativity of fluorine is greater than chlorine. ठीक है, very good. देखिए, फॉर्मल चार्ज वगैरह का ना हम आपसे सवाल मतलब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो तो आप मतलब दोस क्वेश्चंस आर देयर इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, राइट? ठीक है, सो आई विल बी डूइंग द क्वेश्चंस, आई विल बी पुटिंग अप क्वेश्चंस व्हिच आर जनरली नॉट देयर इन द टेक्स्ट. ठीक है,
तो ऐसा नहीं कि दे आर नॉट इम्पोर्टेंट. आई होप बाय नाउ यू विल नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट नॉट इम्पोर्टेंट. चलिए अगला सवाल. प्री बोर्ड में आपके पास से फजान रूल टाइप से कोई सवाल आया था? फजान रूल इज देयर ना. Yeah, so like stronger covalent bond. Covalent bond and ionic, sorry, not stronger covalent bond, but rather which of the following has higher covalent nature or higher ionic nature, उस टाइप के सवाल. जैसे Yes, ये sir. है. ठीक है, प्लीज ट्राई दिस. So is it AgI, SnCl4 and MgCl2? कैसे आप कर रहे हैं बताइए जरा. मोर कोवलेंट कैरेक्टर है ना. चलिए ठीक है. तो एक ही तो सेम है यहाँ पे, क्लोरीन एंड आयोडीन. व्हाट इज द क्राइटेरिया? So iodine is bigger. हाँ ठीक है, चलिए पहले हम क्राइटेरिया लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फजास रूल. कोवलेंट कैरेक्टर of ionic compound, it is directly proportional to size of anion and inversely proportional to size of cation, right? यहाँ पे since the cations are same, I will compare anions. So chlorine and iodine में iodine is greater, therefore AgI is more covalent. ठीक है. SnCl4 और SnCl2 में, अच्छा, also one more thing, size of ion anion तो हो गया, and it is directly proportional to the डायरेक्टली. हाँ चाहिए. SnCl4 में और SnCl2 में क्या डिफरेंस होगा? चार्ज का, राइट. मेक सेंस. Yes, sir. ठीक है. तो अब यहाँ पे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. जितना ज्यादा कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा हो या फिर एनायन का चार्ज भी जितना ज्यादा हो, दैट्स दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. तो यहाँ पे अब आपके पास है SN4 पॉजिटिव एंड वी हैव SN2 पॉजिटिव. सो दिस इज ग्रेटर चार्ज, देयरफॉर SN4 पॉजिटिव, sorry, not SN4 positive, but rather SnCl4 will be more covalent. Then we have Cl2. Cl2 दोनों में सेम है. आपके पास है Be, what do we have? 2 positive and Mg2 positive, which is having smaller size. बेमक्का, so obviously beryllium is smaller than, है ना. साइज की अगर हम बात करें, we are comparing the size. So Mg is greater in size, and since it is a cation, therefore BeCl2 will be more covalent. BeCl2 समझ में आया? Yes, sir. Oh, Siddika and Amna are also here. Assalamu alaikum, guys. Amna and Siddika, am I audible?
Yes, sir. ओके फाइन। सिद्दीका, एम आई ऑडिबल? सिद्दीका इज नॉट हियर। खदीजा, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके। थोड़ा लेट है आप लोग, बट टाइम पे आने की कोशिश कीजिए, 1 घंटे का ही क्लास हो रहा है। देखिए, लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी या फिर लोएस्ट स्ट्रक्चर, लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आप खुद से पढ़ लेंगे, ठीक है ना? टेक्स्ट बुक में भी आपके पास है, व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, हमने क्लास में भी कराया हुआ है, ठीक है? तो उन सब चीजों को पढ़ लीजिएगा। आई एम गिविंग यू क्वेश्चन जो जनरली बच्चों के नजर से निकल जाती है, ठीक है, विच दे डोंट सी। चलिए, ट्राई टू डू दिस फर्स्ट वन। यू कैन आंसर इन द जूम चैट इटसेल्फ, लाइक वन फ्रेज, 2-3 वर्ड्स में आंसर कर दे। एक्सप्लेन व्हाई द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3। I will wait 1 more minute. You can answer it on the Zoom chat itself. आपको बहुत ज्यादा लंबे चौड़े आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। Just need to provide a simple frame, A और B दोनों के लिए, किसी का भी आपको अगर आंसर आ रहा हो। 1 more minute, guys. Then I will explain these two. Time is over.
ये पहला सवाल, आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर इन योर नोटबुक ऑलरेडी. ठीक है, सो इवन इफ यू आर हैविंग नोटबुक, आप अगर इफ यू फ्लिप सम पेजेस यू विल गेट द आंसर. व्हाई द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 greater than that of NF3? So when I compare NH3 and NF3, PC, this is NH3 and this is 3 fluorines NF3. ठीक है. Now if I compare, nitrogen is same in both the cases. ठीक है. फ्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा. If I compare the electronegativity of nitrogen and fluorine, then nitrogen is greater. That means electrons will be more near to nitrogen. The shared pair of electrons will be more towards nitrogen. If I compare with nitrogen and fluorine, then fluorine is more electronegative, and that is why the electrons will be more towards fluorine. Now, when the electrons are away, as you can see, if they are near fluorine, they are already very away from each other. That is why repulsion will be less, and that is why they will not be having a higher angle. But when I look at the electrons which are closer to nitrogen, as they come closer to nitrogen, they are also near to each other. The electrons are near to each other, and that is why there will be a greater repulsion between these two bonded pair of electrons. Why? Because nitrogen in NH3, nitrogen is more electronegative than hydrogen. In NF3, fluorine is more electronegative. Now, if the electrons are closer to each other, there will be more repulsion, and when there is more repulsion, they will be moving away from each other, making the angle greater than that of NF3. So basic यहाँ पे आंसर है due to, because, either I should write, because nitrogen is more electronegative than hydrogen in NH3. Therefore, electrons are nearer and face more repulsion. Therefore, and face more repulsion, and the angle increases. But in NF3, electrons are far away, as electronegativity of fluorine is more than nitrogen. ठीक है, that's it. So this is regarding the first one. तो बेसिक इसका आंसर आपको जो दिमाग में रखना है, when this question comes ना, तो आपके पास दिमाग में रहना चाहिए कि NH3 में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, NF3 में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. दैट इज द आंसर दैट शुड हैव इन द हेड. और फिर उसको आपको जब टेक्स्ट बुक में जब लिखेंगे या फिर व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, व्हेन यू राइट द आंसर, इट शुड बी क्रिस्प एंड प्रिसाइज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास why HCl is polar whereas Cl2 molecule is non-polar. तो HCl में because due to electronegativity difference once again, HCl में delta En is greater than 0. Difference in electronegativity is 0, is greater than 0. But Cl2 में क्या होगा, Cl bond है, that is why delta En is equal to 0. There is no electronegative difference between one chlorine atom and the other chlorine atom. ठीक है, make sense? Yes or no? Please tell me. Amna, Khadija and Harsha. Yes, sir. चले, चलिए let's see another question.
ट्राई दिस वन। इसका भी सिंगल लाइन में आप आंसर लिखने की कोशिश करें। So we're referring to electronic geometry or shape? What here? Yes, They are sir. referring to the shape, not the geometry. पिरामिडल ज्योमेट्री तो किसी की नहीं होती ना, राइट। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो सिर्फ आपका या तो लीनियर होगा और ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और इट विल बी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के बाद सीधा आपके पास चला जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड देन ऑक्टाहेड्रल, राइट। Yes. है ना, ठीक। अगेन शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स। I've got one answer. Yeah, that is very crisp, right? एक बस उसमें और इंफॉर्मेशन आपको ऐड कर देना। फर्स्ट थिंग इज दिस NF3 has sp sp3 hybridization, and nitrogen has one lone pair. Therefore, and you also make this इस तरह से, this will be the shape. BF3 has sp2 hybridization. Therefore, the structure will be trigonal planar. My next one. Uh, I hope it becomes easy for you. That is why I'm writing A B C D, है ना, A B C, ठीक है? I think it will be easier for you guys to write in the Zoom chat.
Okay, I got one answer. ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो CH4 इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, BCl2 is having sp hybridization, and NH3 is having sp3 hybridization. From hybridization itself, we can see that BeCl2, that is sp hybridized molecules, will be having the highest bond angle. ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू सी कि हमारे पास CH4 में sp3 है और NH3 में लोन, यहाँ पे sp3, दोनों में sp3 है। सो यहाँ पे एक चीज होती है दैट देयर इज जीरो लोन पेयर, and here we have one lone pair. Now, as the lone pair number is more, angle will be the smaller, no? Harsha, what happened? See, आपका थोड़ा सा गलत हो गया इसके बाद। नहीं, The CH4 then NH3. या CH4 and then NH3, ठीक है। So bond angle, it is inversely proportional to the steric number, ठीक है। steric number वैसे अगर देखा जाए तो इसका 4 है, इसका 2 है और इसका भी 4 है, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना steric number कम होगा उतना ज्यादा bond angle होगा। एंड bond angle, it is directly proportional to, okay, inversely proportional to the lone pair on central atom, lone pair on central atom। lone pair बढ़ेगा तो bond angle कम होगा। तो first of all you will have B, it is largest, and then A, CH4, and then C, that is NH3। I hope you have written this down। उसके बाद let us move on to the molecular orbital theory type of questions, ठीक है। Hmm, एक सवाल आप लोग बॉन्ड एंगल कर लें तो सारा आप लोग का जितना भी है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सो राइट दिस क्वेश्चन, आफ्टर दिस वी विल डू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
व्हाट हैपेंड गाइस, आंसर नहीं आ रहा बिल्कुल। फर्स्ट में तो यू विल जस्ट हैव द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाकी कोई और डिफरेंस वहां पे है नहीं। NO2 पॉजिटिव, NO2 and NO2 नेगेटिव में you will have some difference in the electronegativity. PF3, PH3 और PCl3 में भी the only difference will be in the electronegativity, nothing else. I hope आंसर आ जाना चाहिए था अब तक। ठीक है, let us see the first one. तो A में as you can see oxygen, sulfur and selenium, see all of these are from the same group, so they will be having similar shapes, that is bent shape. ठीक है, तो because the electronegativity of oxygen is very large, that is why it will be having the largest angle. H2O का सबसे ज्यादा होगा, and then you will have H2S, oxygen, sulfur and then selenium. The electronegativity decreases as we go down the group. So H2S and then you will have H2SE. Now, if I look at NO2 positive, NO2 and NO2 negative. Now, in this case, uh, NO2 positive, NO2 and NO2 negative. We know that the bond angle, it is inversely proportional to steric number. और स्टेरिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करें। व्हेन इट इज NO2 पॉजिटिव, obviously the number of valence electron will be less, and when the valence electron is less, it would make less bonds as well as the number of lone pair will be less. इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकाल लेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही लोन पेयर आता है। सो इफ यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, द स्टेरिक नंबर ऑब्वियसली विल कम डाउन, सो बॉन्ड एंगल विल बी मोर। तो हियर और फिर उसके बाद NO2 में यू आर नॉट रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन, एंड NO2 नेगेटिव में यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो एज वी एड इलेक्ट्रॉन, द स्टेरिक नंबर विल इंक्रीज, एंड इफ द स्टेरिक नंबर इंक्रीजेस देन व्हाट विल हैपन, द बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। तो यहाँ पे आपके पास जो होगा, इट विल बी NO2 पॉजिटिव, then NO2 and then NO2 negative. Now, in the last case, we have PF3, PH3, and PCl3. So here also the electronegativity difference. So, but यहाँ पे जो electronegativity difference है ना, that is in the surrounding atom. ठीक है, surrounding atom का आपको देखना है। तो if the surrounding atom is more electronegative, then what is going to happen? The bond angle will be smaller. तो आपका सबसे small होगा किसमें? Electronegativity सबसे ज्यादा किसका है? PF3 का। After this PCl3 and after this PH3. उल्टा कर लिया हमने सबसे। हाँ, उल्टा हो गया, उल्टा। आई थिंक PH3 से स्टार्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। PF3, electrons will be here, so the bond angle will be less। तो सबसे ज्यादा होगा PH3 का। PH3 के बाद it will be PCl3 and followed by PF3। यहाँ लिखा था ना NF3, नहीं ये वाला S3 ग्रेट है उसी तरह से। हाँ, जैसे NH3 और PF3 वाला आपको करना है। प्लीज कॉपी दिस डाउन। This one made sense, Harsha, Amna and Khadija. Yes, Harsha? Yes, sir. ठीक है, चलिए moving on to the molecular orbital theory.
क्या लिखेंगे इसका आंसर? You have to base it on the bond order, है ना? In order to get the bond order, you have to write the electronic configuration for C2 and Be2. So when you have C2, then the total electrons, it will be equal to how much? 12. फिर इसके आगे कैसे करेंगे? You have to fill 12 electrons, right? Sigma, molecular orbital configuration. Sigma 1s, sigma 1s, 2 electron, then sigma 1s star, 2 electrons, and after that sigma 2s, 2 electrons, then sigma 2s star, 2 electrons. ठीक है? अब इसके बाद since we are having 12 electrons, that is less than 14, तो आपके पास क्या आ जाएगा? You will be having 2 pi, आपके पास होगा पाई एक्स स्क्वायर और 2 py स्क्वायर, दोनों में बराबर होगा। ठीक है? Here you will have pi, pi 2px इक्वल टू पाई 2py, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर आप देखें, 2 2 4 2 6 8 9 10 11 12, so here you can see that there are 12 electrons. इसके बाद you will calculate the bond order. It is equal to number of bonding minus number of anti-bonding divided by 2. Number of bonding electrons is equal to 2 4 6 8 minus total number is 12, minus 4 कर दीजिए, divide by 2. So 8 minus 4 is 4 divided by 2, that is equal to 2. So bond order is 2. Therefore, it will exist. ठीक है? But when we talk about Be2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, so बेरिलियम के पास कितना हो गया? 4. तो बेरिलियम 2 will be having how many electrons? 8 electrons. ठीक है? Now molecular orbital configuration will be sigma 1s, 2 sigma 1s star 2, sigma 2s2, sigma 2s star 2. So 8 electrons are done. If I calculate the bond order now, it will be equal to number of bonding minus number of anti-bonding divided by 2. Number of bonding is equal to 2 plus 2, 4. Anti-bonding is also 4. 4 minus 4 is equal to 0. 4 minus 4 divided by 2, it is equal to 0. So bond order is equal to 0. Therefore, molecule does not exist. Please copy this down. Harsha, you must have seen, guys, you must have seen this type of questions, right? Amna, Khadija, Harsha? Yes, sir. ठीक।
Focus down. Answer. Okay. See another question. Try this. Yes, Harsha. Correct. So N2 will have 14 electrons. The molecular orbital configuration will be sigma 1s 2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. Now, after that, we will start with pi. वह सबसे पहले आएगा pi 2px, 2 electrons, which will be equal to pi 2py, 2 electrons. Now, after pi 2px and pi 2py, आपके पास आएगा sigma 2pz, sigma 2p Z2, and I think 14 electrons are done. 2, 4, 6, 8, 10, yeah, 14. Now bond order will be equal to number of bonding minus number of anti-bonding divided by 2. 2, 4, 6, 8, 10. 10 minus 4, total आपके पास 14 है ना? That's right. 4 electrons are in the anti-bonding. Divided by 2. This will be equal to 6 divided by 2. That is equal to 3. So bond order is 3. And you can see
All the electrons are what? All the electrons are paired. All electrons are paired. Therefore, diamagnetic. एक सवाल आप लोग उससे कर लीजिए, वेस्पर थ्योरी का हमने नहीं दिया कोई भी, शेप वगैरह निकालने के लिए आपको। इन चार का ज्योमेट्री एंड शेप। कैन यू गेस सेंड दी आंसर्स SF4। देखिए, सल्फर इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ द 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आर, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। देख लीजिए जरा कैसे करते हैं इसको। सल्फर, सो सल्फर विल हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 आर टेकिंग इन बॉन्ड पार्ट, 4 आर टेकिंग participating in bond formation, 2 electrons are remaining and that will make 1 lone pair. So 4 bonds plus 1 lone pair electron क्या हो जाएगा बताइए। Steric number, it is equal to 5. Steric number 5, it means the geometry is going to be trigonal bipyramidal. It is trigonal bipyramidal, ठीक है। अच्छा, trigonal bipyramidal कैसे होता है? सल्फर लाइक दिस। अब इसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है द शेप क्या होगा। दिस इज द ज्योमेट्री। नाउ शेप में डिपेंड करेगा वेयर द इलेक्ट्रॉन्स विल गो, द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स विल गो इनटू वन ऑफ द ट्राइगोनल पार्ट। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यू विल हैव द फ्लोरीन लाइक दिस, एंड दिस इज अ सीसॉ स्ट्रक्चर, HeO2F2, ठीक है। HeO2 में अगर आप देखेंगे तो जेनॉन, इट इज हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से अगर आप ध्यान दें तो ऑक्सीजन इज व्हाट, इट इज हैविंग, it makes double bond, fluorine makes 1 bond. So oxygen will be using 4 electrons and fluorine will be using 2 electrons. So 4 + 2 electrons are used in what bond formation. लेकिन total number of bonds कितने हैं? Total number of bonds is 4 only, ठीक है। So because oxygen it is using 4 electrons but it is using making what, 2 double bonds, 2 double bond and 2 single bond like this, ठीक है।
So 8 में you will subtract one lone pair or two electrons. Two electrons means one lone pair. Number of sigma bonds, this is equal to 4. So it is again the same thing. ठीक है ना? 4 plus 1, that is going to give you TBP with one lone pair electron. ये कैसे होगा? You will have xenon. Sir, how did we get one lone pair? 4 electrons plus 2 electrons, 6 electrons, and 2 electrons remaining. That will give you one lone pair. Okay, 8 sir. valence electrons, 6 are participating in bond formation. 2 electrons remaining. 2 electrons will give you one lone pair. ठीक है? Can we consider the double bond electrons also Where in? in finding lone pair? No, I have considered a double bond electron here only, no? Because they are in the bond formation. Make sense? Okay, sir. Yeah. Double bond like this, and fluorines will be like this. Okay, and here is the lone pair. XeOF2. So oxygen will be making one double bond, and fluorine will be making two single bonds. So 8 valence electron minus one double bond, that means 2 and 2, 4. So how much is remaining? 4. 4 means two lone pairs. ठीक है? Two lone pairs, and how many bond pairs? Or rather sigma bond will be equal to 3 only, ना? दो single bond और एक double bond, 3 हो गया. ठीक है? So 3 plus 2 will be again what? TBP. But this will look a bit different. Xe, there is one oxygen. तो आप पहले तो इसको ऐसे बना लेते हैं. And there are two lone pairs like this.